सर इंग्लिश का एक शब्द है जिसका मतलब है ब्रेन वॉश। हाँ। क्या आप जानते हैं उसका मतलब क्या होता है? नहीं नहीं। उसका मतलब ये मैं आपको बता देता हूँ, ये होता है कि अगर मैं बोलता हूँ कि आपका ब्रेन वॉश कर दिया गया है, अच्छा। मतलब आपको कोई चीज दिमाग में बिठा दी गई हाँ है, हाँ वो चाहे सच हो या ना हो, हाँ हाँ जो हमने बोली है आपके दिमाग में बस वो बात बैठ गई है हाँ और हाँ। आप उसी को ही सच मान रहे हैं और उसी को फॉलो कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो इसी बारे में है। हाँ हाँ। ओ हो। दुनिया के बहुत सारे लोग और बहुत सारे देश ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि अमेरिका के लोगों का ब्रेन वॉश हो चुका है। अच्छा अच्छा। तो आज इसी के बारे में वीडियो देख रहे हैं। हाँ हालांकि ये जो बंदा जिसने वीडियो बनाई है वो हाँ। खुद भी अमेरिका का रहने वाला है। अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए ठीक है, इसके वीडियो हम देखते हैं, समझते हैं, उसके बाद हम इस पे डिस्कस करेंगे। अभी तक जो है बाबूजी अपने सुना है कि जो सरकारें होती हैं हाँ। वो अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए अक्सर आम जनता का जो है कि इस तरह का भ्रम फैला के ब्रेन वॉश करती हैं अच्छा। चुनाव जीतने के हाँ। लिए। तो शायद हो सकता है ये वीडियो से संबंधित हो। हाँ, अब क्या है कि लोग हर जगह के होते हैं, किसी भी देश के हो, लेकिन लोग बुरे नहीं होते, लेकिन ये राजनेता के हिसाब से वो बात शुरू करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्या न तो उससे वो भड़काना ये करना वो करना, तो इससे होती नहीं तो देश में कोई बुरा नहीं होता और वहाँ के जो रहने वाले हैं वो लोग बुरे नहीं होते। आपकी बात से 150% सहमत हूँ मैं। हाँ। अब ये बंदा अमेरिका का रहने वाला है हाँ। और बाद में अमेरिका के लोगों की बता रही है, तो ये हाँ। तो इससे देखने के बाद ही पता लगा कि आखिर ये क्या चीज बताना चाह रही है, हाँ, किस तरह से ब्रेन वॉश हुआ। बिल्कुल बिल्कुल देखना पड़ेगा। लगा जैसा बहुत रोचकमय जानकारी। There is some wild propaganda that Americans are taught and don't even realize it's क्या बात कर propaganda. रहे Now, I should preface this by stating that I am an American. I love my country. My family goes all the way back to Jamestown. My grandfather fought in World War II. I was born in Los Angeles. I went to university in Texas. I was raised singing the Star Spangled Banner and reciting the Pledge of Allegiance. ये पहले ही इसने एक बार साफ कर दिया कि मैं जो है देश द्रोही, मैं भी देश में भक्त हूँ, लेकिन सच क्या है वो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। और शुरू में ये जो बात बोली मेरे को इसी बात से ये लग रही है। I am about as American as it gets. Well, besides these guys. But I've also spent the last decade studying cults, dogma, and religious extremism, and thought control. And as someone who has lived in over a dozen countries and traveled to more than 35 of them, I've started noticing some extremely troubling forms of propaganda that Americans are taught from childhood. यार ये बंदा बहुत नॉलेज वाला आदमी को कोई अनजानी नहीं जैसे जैसे बाकी जो भी बात करे सोच समझ के बिल्कुल उसके साथ करिए। Things that people in free developed democratic countries overseas find absolutely bizarre, and things that most Americans never question because we've been marinating in it since birth. And look, every country has its own brand of propaganda. ये बिल्कुल बात सही है, हर देश के अपने अपने प्रोपेगेंडा होते होंगे। हम भी आप में से एक जैसे ही हैं जो बैठे हैं। Of propaganda. I'm not trying to pretend that America is uniquely evil here, but what makes American propaganda so effective is that most of us don't even realize it exists. We think that propaganda is something that happens in North Korea or Soviet bases. मतलब कहने का ये कि इतना अपने दिमाग में बिठा दिया जाता है कि ये ऐसा है ना वो ऐसा है, ये करो, तो ये बिल्कुल अपना माइंड जो है भेजा अपने ऐसा बना देते हैं कि अपने को सोचने को मजबूर कर देते हैं लोग। सोचने को मजबूर नहीं, सोचने समझने की शक्ति को भ्रष्ट कर देते हैं। Posters of dictators and state-controlled media. We don't recognize it when it's sung at football games and printed on a bumper sticker. So here are 7 forms of propaganda that you probably didn't even realize that you grew up with if you're an American. सही बात। फिर हम अमेरिका से नहीं है, लेकिन जो आप बता रहे हो वाकई में हम सब आपकी बात की सराहना करते और आपको सलाम करते हैं। Number 1, US-centric education. American history is extraordinarily short. We are talking a few centuries compared to civilizations that span millennia. And yet, if you grew up in an American public school, you would think that the United States was the center of human history. Geography classes often aren't taught at all, and world history courses, when they are taught, are basically how does the rest of the planet relate to America. The Vietnam War is taught as a war for freedom. Westward expansion is framed as brave pioneers taming a wild frontier. यार भैया जाहिर में बताया कि यार कोई भी देश है उस देश का बच्चा अगर कहीं पढ़ है तो उसकी जाहिर भी करेगा, बुरे तो करेगा नहीं। अब इसमें कौन सी बुरी बात? बिल्कुल सही बात है। जो
बड़े बड़ा अचीवमेंट है वही गिनवाएंगे, बुरे थोड़ी गिनवाएंगे। not as the systematic displacement and genocide of indigenous peoples who've been living there for thousands of years. World War II, Americans swoop in and save the day, with little mention of the roughly 27 million Soviets who died on the Eastern Front doing the bulk of the fighting against Hitler. Now, compare that to how other countries teach history. In much of Europe, kids actually learn global history. They study African kingdoms, Asian dynasties, Middle Eastern contributions to science and अरे mathematics. वाह, यार बिल्कुल सही बात है। अब अपन यहाँ बैठे हुए हैं इंडिया में, अब अपन कह देते हैं सिकंदर महान फलाना महान, अब वो क्या अपने क्या बोलते हैं, अपने स्कूलों में सिखाया ये ऐसे, उन्हें ये करा, उन्हें ये करा। ये बात बिल्कुल सही करो आप, क्योंकि अपने देश के अलावा दुनिया का इतिहास भी बहुत बखूबी और तरीके से पढ़ा जाता है। हाँ, They learn about colonialism for what it actually is, not heroic adventure, but exploitation. When I talk to Americans who are traveling abroad for the first time, I'm often shocked at how little they know about the rest of the world. And that's not by accident. A nation which doesn't teach its citizens about the world produces citizens who don't question their own nation's role in it. बिल्कुल एक एक बात सही बोली सर आपने, अब मैं क्या बोलूं, शब्द नहीं मेरे पास। हाँ यार, अब क्या है सब के क्या, अब बच्चों को जो जितना सिखाया वो तो उतना सीखेगा, क्योंकि बच्चा जो है उसका जो माइंड है वो पानी का जैसे होता है, बच्चे को देख रहे हैं लाल कलर जो होता है, लाल कलर उसको बोला पीला कलर, बोला पीला कलर, तो बच्चों का दिमाग ऐसे सब है, तो फिर जो सिखाया है वो तो वो सीखेगा, आगे तो सीखेगा नहीं। बिल्कुल सही बात बोल रहे हो आप। Number 2, the Cold War binary. If you grew up in America any time after 1950, you absorbed one of the most effective propaganda frameworks ever constructed. Communism equals evil, capitalism equals freedom. Full stop. हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि जिस देश की बुराई बचपन से सिखाई गई है, अपन तो इसको बुरा बनेंगे, सच्चाई बनेंगे नहीं, वो सिखाया गया हमारे को तो भाई। No nuance, no discussion, just a clean binary where one side wears white hats and the other side is a cartoon villain. What they don't teach you is that during the Cold War, the United States overthrew democratically elected governments around the world simply because the governments leaned left. In 1953, the CIA helped orchestrate a coup against Iran's democratically elected Prime Minister, Mohammad Mossadegh, because he nationalized Iran's oil industry. In 1954, the US toppled Guatemala's president, Arbenz, because his land reforms threatened the profits of United Fruit Company. In 1973, the CIA backed the overthrow of Chile's Salvador Allende, a democratically elected socialist. यार मैं तो एक बात ही कहना जब जिस हिसाब से आपने बताया, तो कोई सा भी देश है कहीं का भी हो, वो तो अपना फायदा करना चाहेगा। असल से आप अमेरिका का बचा था वो, तो उसके लिए कोई जो अच्छा लगा वो वही कर दिया, वो होगा, अलग तो करेगा नहीं, और वो अपना अपना फायदा भी नहीं देखेगा, अपने फायदे के साथ साथ जनता का भी फायदा भी देखा होगा वो भी। हाँ। And replaced him with Augusto Pinochet, a brutal military dictator who tortured and murdered thousands. The Congo, Brazil, Indonesia, it's all the same playbook. America claimed to be defending democracy while systematically destroying it in order to exploit country after country. This all is recent history, and this binary thinking is still alive and well. If you suggest universal healthcare in America, watch how quickly someone calls you a communist. Propose free public university education, something that dozens of thriving democracies already provide, and suddenly you're a Marxist. यार मैं सोचता था कि अमेरिका में फ्री शिक्षा मिलती है, लेकिन आप जो बता रहे हो हिसाब से तो फ्री मिलती ही नहीं है, मतलब हाँ, शिक्षा फ्री मिलना ही है शिक्षा, तो ये बात सही है। बुरा मत मानना भाई साहब, अब हमारा देश अमेरिका से चलेगा इतना सक्षम तो नहीं, लेकिन फिर भी हमारे देश को खाना फ्री, इलाज फ्री, शिक्षा फ्री, ये तो हमारे यहाँ हो रहा है, जबकि इतना सक्षम नहीं जीता अमेरिका। The Cold War ended over 30 years ago, but the propaganda framework it built is still alive and kicking. If you want to start breaking free from propaganda, one of the most effective and powerful things that you can do is to expose yourself to other cultures, other perspectives, and other languages. My dad was a language teacher, and I grew up multilingual, and I can tell you firsthand that learning another language doesn't just teach you new words, it gives you an entirely different lens through which to view the world. ये बात तो बिल्कुल सही है। वाकई भाषा आपके वो बैरिकेड दूर कर देती है जीवन। वाकई में आपने बहुत अच्छी बात बोली। अगर मैं इसके उम्र में होता तो जाके 2-3 भाषा तो मैं भी सीख लेता।
बिल्कुल सही बात बोली आपने यार। Which is why I love today's sponsor, LingoPie. LingoPie takes a completely different approach to language learning compared to the ineffective methods used in most classrooms and school. Instead of memorizing vocabulary lists or slogging through dry exercises, you learn by watching real TV shows and movies from the countries where the language is spoken, immersing yourself in their culture. It is engaging and is far closer to how people naturally acquire language. If you don't recognize a word, every subtitle is clickable, so you can instantly see the translation and save it. If you've ever wanted to learn another language, or just expose yourself to different cultures and perspectives, click the link below to get a 7-day free trial plus 55% off an annual plan, and go see how it works for yourself. Number 3, the land of the free myth. Americans are told from birth that the United States is the freest country on earth. It's in the songs, it's on the bumper stickers. It's baked into the nation's identity so deeply that questioning it feels almost heretical. But is it true? Well, let's look at the data. On the Reporters Without Borders Press Freedom Index, the US doesn't crack the top 50. It ranks 57th in the world, just below Sierra Leone. On the Cato Institute's Human Freedom Index, and keep in mind, the Cato Institute is a libertarian think tank, not some leftist outfit, multiple countries outrank America in both personal and economic freedom. The United States incarcerates more people per capita than almost every other country on the planet, more than China. आबादी चीन की ज्यादा और केस ज्यादा यहाँ हो रहा है बाबू। बोलो यार भैया, ये जितने भी आंकड़े आपने बताए हैं, ये सारे आंकड़े सुन के साथ मेरा तो दिमाग ही More than Russia, Iran, or North Korea, the land of the free locks up more of its own citizens than almost every authoritarian regime on earth, and a disproportionate number of them are black and Latino. यार इसमें यार ये जो भेदभाव आप कर रहे हो नहीं, वाकई में ये बहुत ही गलत है। तो यार भेदभाव तो होने चाहिए, काला हो या गोरा है तो वो भी इंसान है, ये भी इंसान, तो इसमें भेदभाव करने का काम क्या है यार, ये बताओ। अब यार बाबू भाई, अगर संविधान सबके साथ एक जैसा होना चाहिए, जिसने जुर्म करा उसको अंदर डालो, चाहे हमारे हिंदुस्तान जैसा साउथ इंडियन हो, बिहारी हो, उत्तर भारतीय हो, दक्षिण भारतीय हो, यहाँ पर अंदर नहीं, तो ये भेदभाव हमारे नहीं है, रंग भेद का भाव नहीं, यहाँ तो बस जिसने जुर्म करा उसको अंदर डालो बस। This is not what freedom looks like. It is a system designed to warehouse people. But it goes deeper. A handful of corporations control vast swaths of American industry, from media to agriculture to healthcare and tech. These corporations aren't just influencing a little bit of government policy, they're writing the policy. Politicians respond to donors and lobbyists, not constituents. Hell, there was a Princeton study which actually found that the preferences of American voters have a near zero statistical impact on whether a policy gets passed or not. But the preferences of economic elites, big businesses, and organized interest groups are strongly correlated with what policies actually get passed into law. मतलब कहने का ये है कि जो अमीर लोग हैं वो वहाँ के वही सबसे ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। अभी तो गलत बात है, इतना सारे जो उनके वोटर, उनका क्या कसूर है बेचारा? In other words, your politicians don't care what you want unless you're a billionaire. Elections are largely bought and paid for. ये तो सब हर जगह हम देखने में आता है, विशेष जैसे हम उनकी क्या बोले सर। Gerrymandering carves up districts so that the politicians can choose their voters rather than the other way around, like it should be in a free democracy. Voter suppression laws target communities least likely to vote for the people in power, and the two-party system has become a self-reinforcing trap that incentivizes extremism over representation. We are taught, and this is hardcore propaganda, that America's electoral system is the best. Well, except when our guy loses, of course. But there is a much better electoral system. It is called ranked choice voting. And the only people who prefer our current system over ranked choice are those who are financially incentivized against freedom and democracy. Here's how it works. With ranked choice, instead of picking just one candidate and hoping for the best, you rank out your preferences with your top choice at the top and your least choice at the bottom. If no one wins a majority, the candidate with the fewest votes gets eliminated, and the people who voted for them have those votes redistributed to their second choice. You keep going until someone actually has majority support. It rewards candidates who appeal broadly rather than those who energize the extremes. It reduces what's known as the spoiler effect and creates a better reflection of what voters actually want. There are already several US cities and states which have already adopted ranked choice voting, and it's the norm in countries like Australia and Ireland. But most Americans have never even heard of it.
ज्यादातर अमेरिकी को पता ही नहीं है, हाँ। लेकिन हो सकता है उनको शायद नहीं बताया हो, हाँ। क्योंकि बहुत सी जगहों पे जो है वो सफल भी हो रही है वाला पेतरा। फिर तो ऐसा होना चाहिए ना भैया, फिर से Because the two parties currently in power have Uh-huh. zero incentive to tell you about the system that would Acha. threaten their grip, and they have Ah, ye every baat to incentive to criticize it. अच्छा, वो जो वहाँ की जो पार्टी ने उनको खतरा, इसलिए वो जनता को ये बात वो पहुँचे ही नहीं रहा, पहुँचा देंगे तो मेरे कर्तव्य मेरे को खतरा, ये है वो। You should run aggressively against ranked choice voting. It is a big... Number 4, America's stupidly big military budget. The US spends more on its military than the next 10 countries combined. Let that sink in. More than China, Russia, the UK, Saudi Arabia, Germany, France, Japan, South Korea, and Australia put together. Now, Americans are taught that this spending is about protecting freedom and defending the free world. And sure, a reasonable national defense is necessary. But the vast majority of this budget doesn't go to defense. It funds over 750 military bases in at least 80 countries. It funds interventions, regime changes, drone programs, and the maintenance of a global military empire. Meanwhile, American roads are crumbling. Bridges are collapsing. The healthcare system bankrupts families. अब जब अपने देश की जनता को छुपी नहीं कर पा रहा है, तो 80% को पैसा बढ़ने का क्या मतलब यार, ये समझ नहीं आ रही है। बाबू ये है कि बस एक वर्चस्व बना रहे, ताकत बनी रहे, लेकिन अंदर से देखा तो मामला बड़ा खतरनाक हो रहा है यार। Teachers buy their own classroom supplies. Student debt has surpassed 1.7 trillion, and millions of Americans can't afford basic prescriptions. Other countries, meanwhile, invest their resources differently. Universal health care, free or affordable higher education, robust public transit, paid parental leave, affordable child care. बाबू ये जो चीज बता रहे हैं, बहुत सारी चीजें अपने वहाँ भी मौजूद हैं। ये बहुत अपन खुशनसीब है कि अपन एक जगह से दूसरी जगह आसानी से यातायात के माध्यम से चले जाते हैं। यातायात सुविधा बहुत अच्छी है अपने वहाँ। यार इधर देखा जाए तो अपना इलाज भी सस्ता, पढ़ाई भी सस्ती, खाना पीना भी। हाँ यार बाबू भाई यार। अब हिसाब मेरे तो पैदा होती है ना, दोनों फ्री में पढ़ा है, वो भी सरकारी परचेज। And as a result, their citizens are measurably healthier, better educated, less stressed, and by many metrics, happier. This isn't speculative, it's what the data consistently shows. Historians have a term for what happens when an empire pours its resources into military expansion while its domestic foundations rot. Imperial overstretch. And it's how empires collapse. The Romans did it, the British did it, the Soviets did it, and if you look at the trajectory, America is running headfirst over the same cliff. बाबू जनता बहुत अच्छी है, हो सकता है नीति खराब है, कोई बेहतरीन ऐसा बंदा नेता आ जाए तो अभी इस पटरी पे लिया है, वरना जनता बहुत अच्छी है। Number 5. The Pledge of Allegiance. Having children stand up every single morning, place their hands over their heart, face a flag, and recite a loyalty oath in unison is, by any outside standard, one of the creepiest things about America. I'm not saying this to be edgy. When you describe this practice to people from other democracies, their jaws hit the floor. They associate it with the kind of thing that you would see authoritarian regimes do, not in a country that calls itself the leader of the free world. यार इसमें मुझे कोई हर्ज नहीं नजर नहीं आ रहा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं आप बता। Because think about what the pledge actually is. It is a feudal fealty oath. It is a declaration of personal loyalty to a state. Now, I understand why elected officials and military personnel swear oaths of service. That makes sense. They're accepting a position of public responsibility. But requiring a 6-year-old to pledge allegiance to a flag before they can even spell allegiance, it's... आप जो करो बहुत अच्छी बात है, पर आपने एक 6 साल के बच्चे को जबरदस्ती झंडा पकड़ा दिया और वो जो है कि सीने बाहर रखवा दिया, तो ये मजा नहीं आएगा। जब तक उसका असली जो है कि उसका मतलब, उसका अर्थ समझाओगे, तब जाके उसके भेजे में बात आएगी। निष्ठा कर्तव्य आपने समझा दे, लेकिन वो सरसरी तौर पर निकाल देगा, लेकिन उसका असली मकसद और मतलब बताओगे नहीं, तो जो है कि दिल से बात होगी, फिर दिल से देशभक्ति निकलेगी। Brainwashing. Like, you realize the founding fathers would be horrified by this, right? These were men who literally threw off the yoke of another red, white, and blue flag when it represented tyranny. They understood and wrote extensively about the fact that it is the duty of every free person to question authority and resist tyranny, not just pledge blind loyalty to a piece of cloth. बात आप बिल्कुल फरी खड़ी बोल रहे हो, 100% बात आपको बिल्कुल सही है, बिल्कुल फरी है, लेकिन यहाँ तो है कि जो कुछ अपने को ऐसे लोगों को शायद ये बात पसंद नहीं आती। The entire American experiment was built on the idea that governments derive their power from the consent of the governed, and that when a government fails its people, those people have the right and the obligation to challenge it. This is the entire reasoning behind the Second Amendment.
Creating mindless, loyal zombies out of children is the exact opposite of what the founders fought for, and yet suggests that we stop doing this in our children's schools and watch how fast you get called un-American. बात कितनी बड़ी मिसाल दे दी बाबू भाई कि बच्चों को ज़ॉम्बी बनाना। ज़ॉम्बी का होता है कि एक भेड़ चाल जिस दिशा में आपने कर दिया वो करते चले जा रही है, अपने दिमाग से कुछ नहीं सोचेगा। Number 6. The myth that America was founded as a Christian nation. If you've ever driven through the American South, or honestly large parts of the Midwest and rural America, you've probably seen billboards saying things like, hell is real, abortion is murder, and Jesus saved. आप जो कह रहे हो वो बात मैं खुद अभी ये बात मानता हूँ कि अभी तक हमने देखने में आया कि अमेरिका एक क्रिश्चियन देश है, इसमें नहीं पता कौन सी बताता है यार। यही तो बात वो किया कि आपका ये भ्रम है, अब वो भ्रम क्या है क्या नहीं है वो चीज आगे खुलासा होगी। हाँ चलो वो खुलासा बताओ क्या है वो। They line the highways like wallpaper, so pervasive that most people stop noticing them. Religious messaging in America is so saturated into the culture that it becomes invisible, which is exactly what makes it so effective. But here's what a lot of Americans don't know. The United States was never a Christian nation. The founders were explicit about this. The Constitution makes zero mention of Christianity or Jesus. The First Amendment enshrines the separation of church and state. The Treaty of Tripoli, unanimously ratified by the Senate in 1797 and signed by President John Adams, states in very plain language that the government of the United States is not, in any sense, founded on the Christian religion. बिल्कुल आप जो बता रहे हो आपका ढांचा भी हमारा हिंदुस्तान जैसे सेम मेज खा रहा है। आपका लोकतंत्र और हमारा लोकतंत्र कहीं ना कहीं बराबर ही बैठ रहा है कि सब जगह जो है कि धर्मों को जो है कि सभी धर्मों का आदर है, किसी एक विशेष धर्म का वो नहीं रहेगा, नहीं है, सबको बराबर। That is not my interpretation. That is a legally binding document from the founding generation. So, where did the Christian nation myth come from? Well, in keeping with the rest of this video, propaganda. Cold War propaganda, to be specific. Under God was added to the Pledge of Allegiance in 1954. In God We Trust was added to the paper currency in 1957 and adopted as the national motto the year before. Our original motto, E Pluribus Unum, is more about plurality. Out of many, one. Both of these actions were deliberate moves to contrast the United States against godless communism. ये जो चीजें बाबू भाई वो बाद में जोड़ी गई है क्योंकि वहाँ के संविधान में अभी चीज लिखी भी नहीं है। They weren't ancient traditions passed down by the founders. They're marketing decisions which were made by politicians in the 1950s. And now, barely 70 years later, millions of Americans will swear on a stack of Bibles that this country was founded as a Christian nation and that anyone who says otherwise is attacking their heritage. The conflation of patriotism with Christianity is itself a product of propaganda. And it's one of the most dangerous because it means that questioning religion in America isn't just seen as blasphemy, it's treason. वाकई में यार वो इतनी अच्छी बात है, इससे ये मालूम पड़ा कि ये राजनेता का कहता है कि ये धर्म को मानना, ये धर्म को मानना, क्या बात। वहाँ राजनेता होते हैं ना बाबू भाई, हमेशा ऐसी चीजें पैदा कर देते हैं कि उनकी तरफ झुकाव पैदा हो जाए। वही Number 7, American exceptionalism. This one is huge. The one that ties all the rest of it together. American exceptionalism isn't just this belief that America is different. It's a belief that America is inherently superior, better, divinely favored, the greatest country that God ever put on this earth. And it functions not just as a belief, but as a social enforcement mechanism. मैं तो मानता हूँ कि दुनिया भगवान ने बनी किसी एक के लिए नहीं तो सबके लिए है बाबू भाई। इस बात को मैं गलत मानता हूँ। सभी बराबर, सभी उचित नहीं। Because in America, criticism of the country is treated as betrayal. Point out that other nations have better healthcare outcomes, and you're told, well, why don't you just move there? यार इससे मैं सहमत नहीं हूँ क्योंकि देश की आलोचना करने से मैं परहेज करता हूँ यार। मैं नेताओं की आलोचना कर सकता हूँ लेकिन कभी देश की आलोचना नहीं कर सकता हूँ। Suggest that the military budget is bloated, and it is bloated, and suddenly you hate our troops. If you point out that Americans rank poorly on education, press freedom, or infant mortality compared to other developed countries, and you're suddenly ungrateful. Even liberals and progressives who critique America specifically because they want to improve it get branded as unpatriotic. Do you see how backwards that is? The messaging is clear. You can love America or you can criticize it. You can't do both. But in most healthy democracies, critique is understood as a form of patriotism. ये बहुत अच्छी बात, ये होनी चाहिए बाबू मेरे हिसाब से हर देशों में, क्योंकि अगर आप आलोचना करोगे तो आप देश की तो नहीं करोगे, आप सरकारों की करोगे, ताकि सरकारों को सूझ भी बैठेगी, गलत कदम उठाने से बचेगी। अफ्रीका में तो पक्ष एक विरोध में
समर्थन में। Wanting your country to live up to its own ideals isn't betrayal. It is the highest form of civic engagement. The pressure to never question America, to treat any criticism as an attack, to reflexively defend the status quo no matter how messed up it is because admitting a problem feels like admitting defeat. That social pressure is itself one of the most effective forms of propaganda there is, because it doesn't require a government agency or state-run media outlets. It's enforced by your neighbors and your coworkers, your family, and your own internalized guilt. Like I said at the beginning, I don't hate America. I want it to be better. And if that makes me un-American in your eyes, then, well, I think I kind of proved my point. It is the civic duty of every citizen to question what we've been taught, to explore outside the bubble, whether that's through reading, traveling, or learning other languages, using LingoPie, of course, and exposing ourselves to the perspectives that challenge our own assumptions. It's our duty to push back against propaganda and to exercise the very First Amendment rights that we claim to value. Because things don't have to be like this. They can be better. But we have to first recognize the propaganda and be honest with ourselves in order to get there. If you guys enjoyed this video, please smash that like button, share this with someone who needs to hear it, and if you want to support my work, you can do so with either a per video pledge on patreon.com/Holy Koolaid or a one-time PayPal donation. Links to all of that are in the description below. कोई भी देश, कोई भी सरकार बिल्कुल परफेक्ट या सही नहीं होता है। अगर वहाँ को कुछ अच्छाई होती है तो वहाँ को कुछ कमियाँ भी होती है, और हमारे भी ये सब होते हुए चला आया है। अब ये सिर्फ आपके देश में ही नहीं हो रही है, अगर हम इस बात को उठाएं तो हर देश में जो है कि ये मामला फिट बैठ रहा है। हर देश की कुंडली कहीं ना कहीं मेज खाएगी, बिल्कुल खाएगी यार। इस बंदे की वाकई में हिम्मत देनी पड़ेगी कि इसमें बंदे ने बिल्कुल खुल कर उसकी सरकार की आलोचना कर दी। जो कमियां थी एक एक ने बिल्कुल खुल कर बताया। अब मैं समझता बाबू, देखो लोकतांत्रिक देश है, इतना बड़ा देश है, सक्सेसफुल देश है, तो बाबू ये बहुत अच्छी बात है कि वहाँ पर सरकार ने खुली छूट दे रखी है वहाँ के कानून में, और वो गाइडलाइन ऐसी मजबूत है कि बंदा खुल के आईना दिखा रहा है। और ये चीज क्या करती है, इंसान को मेहनत करने में मजबूर करती है ताकि आगे तरक्की करे। ये नहीं कि आपने बोला और बात दबा दी गई और राजनेता उसकी मजे ले रहा। ये बहुत अच्छी बात है कि खुल के इसने बात करी, और वहाँ के लोकतंत्र में ये है चीज। अब उसने बताया है कि 80 देशों की उसने अपनी आर्मी बिठा रखी है, तो मैं समझता हूँ कि सरकार ने कहीं ना कहीं जनता की भलाई के लिए चीज करी होगी। अगर वो कहीं ना कहीं वो नुकसान नजर आ रही है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं फायदा भी उनको हो रहा होगा जनता को, वरना इतना बड़ा बजट जो सरकारी बजट है वो 80 देशों के उस पर आर्मी के बीच में खर्चा करना बच्चों का तो खेल नहीं है। देख भैया, भ्रष्टाचार हर जगह हर देश में कहीं ना कहीं। अब ये चीज अगर नहीं है तो मैं समझता हूँ, अगर ये नहीं तो मेरे लिए बड़ी अच्छी बात है। मैं अमेरिका का एक ये रूप देख के मैं थोड़ा सा आश्चर्यचकित हुआ बाबू भाई, कि अंदर की जो बातें हैं जमीनी स्तर से जुड़ी हुई वो मेरे सामने ही। हालांकि तरक्की, तकनीक, सुविधा और आर्मी ये चीजें बहुत देखी, लेकिन अंदर से जो आम लोगों की समस्या उसका समाधान उसके एक वीडियो का माध्यम मुझे बहुत अच्छा लगा देखने के। यार वो आदमी एक आदमी जो करोड़ों जनता समझ नहीं सकते ना भाई। लेकिन कहीं ना कहीं वो बंदा उसका वहाँ का नागरिक है, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा भरोसा उस पर कर सकता हूँ। अगर वो सरकार के अपोजिट पार्टी का हुआ तो फिर क्या कर लोगा। हाँ, ये तो बड़ी दुविधा वाली बात है। सर बहुत अच्छी जानकारी थी, बड़ी रोचकमय थी, बहुत ज्ञानवर्धक जानकारी थी। कुछ बातें वाकई ऐसी थी कि ऐसा लग रहा था कि हमारे देश की बात हो रही हो। सर मैं चाहता हूँ कि देश का हर नेता अपने जनता की भलाई के लिए तत्पर रहे और भ्रष्टाचार को जेल में डाले, जरा से भी जो है कि दुर्व्यवहार ना हो ईमानदार लोगों के साथ। इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं, इख्तिताम करते हैं, और कुछ अच्छी नई वीडियो, ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ इसी मंच के माध्यम से बाबू भाई के साथ वापिस मिलकर दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए बने रहे। धन्यवाद।